Good afternoon. Namaskar. I'm just giving a close up. I'm of course in bed ridden now, but this day on October 3rd, 2020, I want to have little discussion on COVID-19 subject. आज अक्टूबर 3 2020 को मैं कोविड-19 के बारे में जो हाल है देश के अंदर भारत में कुछ कहना चाहता हूँ पोस्टिंग के अलावा। रिपोर्ट देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग दोज रिपोर्ट्स एवरी डे एंड आई एम very upset with those reports. Government's reports are based on assumptions, not on facts. Speed with which COVID tests are being done is very, very small, lower, can say inefficient. इतनी कम स्पीड से एक ख्याली पलाव बताया जा रहा है. If you want to analyze, you can analyze. That report notified by government of India, Bharat, itself mandates that 8.4 or 8.5% of those are tested are found positive. जो लोगों का टेस्ट हो रहा है 100 में से 8-8.5% मतलब कह सकते हैं कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, और अभी तक 7-8 करोड़ ही टेस्ट हो पाए. स्पीड इज टू लो, कैन से 1.1 मिलियन या 11 लाख 10 लाख, इससे ज़्यादा नहीं जा रही. स्पीड इज़ टू लो. Even a primary class student can understand it will take at least 3 years to test all population. 3 साल लगेंगे इस स्पीड से ये जानने में कि कितने लोग कोविड पेशेंट हैं, और 3 साल एक कल्पना ही कह सकते हैं. एक कल्पना कविता ऐसा जैसे कविता अपनी लिखी जाती है. हाउ कैन यू वेट फॉर 3 years? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस गवर्नमेंट इज डूइंग. A hypothetical, imaginary prime minister, imaginary government, and careless public. There are 3 reasons. Number 1, our prime minister is imaginary, a poet. Our ministries are completely useless, and public is ignorant, careless. Combination of these 3 reasons is creating all problem. If you take, can you wait for 3 years? It is foolishness to answer yes. Today, I am sure there are about 8 to 12 crores citizens or residents in this country are affected by COVID-19. You may say 10 crores on an average, and say there are 10 crores. This means maybe in 1 month it would be 12 crores, and there are 14 crores. Like this, it will go on multiplying. What to do? What to say? If I say like this, I may be called anti-national. No problem. You may call me anti-national, or you may call me whatsoever. Question is, we are a foolish country, foolish government, and careless people. Who can save you from this? Question is that. If today I can guarantee there are 10 crore people at least positive, and if this
stays continuous, and if it R factor 1 or 1.5 as happened in England, as happened in Europe, what shall happen? This 10 crore can become 15 crore, then it can become 20 crore, then it can become 25 crore. After all, where is limit? Simply answering that people are getting recovered is fake statement. Nobody can be recovered from this. Not even a single person has recovered from this. Yes, there are discharges from hospital or from isolation or from quarantine. They say you are discharged. This doesn't mean that it is recovery, and no recovery at all. There is nothing as such called recovery in case of COVID-19. कोई नहीं कह सकता आज की तारीख में, इस समय पूरे विश्व में, कि कोविड से रिकवर हो गए, पुरानी हेल्थ वापस मिल गई. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. क्या करें? गवर्नमेंट आपका साथ नहीं दे रही, गवर्नमेंट सो रही है, गवर्नमेंट बातें घुमाने में एक्सपर्ट है, हम जानते हैं. पब्लिक गवर्नमेंट की बातें मान लेती है, पब्लिक की बेवकूफ़ी है. I am also one of those stupids who accept all this. We should be careful. COVID-19 has captured even top people of world. What you are and what I am, nothing. Therefore, one has to be very serious in consideration of resorting to precautionary measures, wearing mask, wearing glasses, hot water, boiled water drink, hot food, walking, avoiding crowd, and using mask all times, even if you are in WC, water closet, fighting. चाहे आप चल रहे हों, भीड़ में ना जाएं, पैदल चलने की कोशिश करें, गर्म पानी पिएं, गर्म खाना खाएं, सूरज की रोशनी में छत पे जाएं. बेशक आपको आपका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं आएगा. सिंपल सी बात है. आत्मनिर्भरता इसे ही कहते हैं. दिस इज डेफिनेशन ऑफ सेल्फ रिलायंस. Nation has to be self-reliance means nation is nothing but public of this country. Public must be self-reliant according to government, according to Prime Minister, who is a merchant for everything. What to do? I have no more explanation for this. It's public that has to understand where do these things. Forget about bhakts and forget about political parties. No one is going to even advise what to do. You have to advise yourself. I am bedridden now, you know. I am very well bedridden because of accident. I was involved on September 12th. I was admitted in hospital up to 21st. And I undergone 2 operations, one on 14th September and the other one 18th September. One was fracture in ankle and other was fracture near hip. I can't go outside now. I am for 2 or 3 months bedridden. No, even then I every day analyze report that poured in from government website, not from private website. And these government people do not analyze anything. They just try to cheat public by saying that discharges are these, recoveries are these, and deaths are these. I'm not worried of deaths because whoever dies has gone. No one can help it. And that person relieves of all problems himself, you know. Problem kahan hai? Problem is where people do not die. This means this disease resides in your body. This disease resides in your body. This disease resides in your body. I am repeating. This is very, very significant consideration because particle size of COVID is
0.0002 mm. This is 1/10 of size of clay particle. No one can find and see this particle. Even electron microscope cannot see this, cannot identify this. So these particles remains in our body. It can impact on heart, it can impact on mind, it can impact on whatever part, even sexual organs. It can impact on eyes, it can impact everywhere, any whatever time in future. ये इतना ख़तरनाक पार्टिकल है. साइज़ अगर देखेंगे 0.0002 मिलीमीटर, 1/10 चिकनी मिट्टी के पार्टिकल से भी छोटा. और आप समझ सकते हैं आपके शरीर में अगर ये रहता है, निकलता नहीं है या मरता नहीं है, तो आपका डिस्चार्ज तो हो गए, ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता. ये बात डराने की नहीं है, समझने की है. खुश नहीं होना है कि डिस्चार्जेस इतने हो गए, कोई बीमार नहीं हुआ. गलत फहमी हो चुकी है देश की पब्लिक को. बहुत लोग कहते हैं जी कुछ नहीं होता, इससे ठीक हो जाते हैं. हाँ, ठीक हो जाते हैं. कहाँ लिखा है ठीक हो जाते हैं? कौन से वैज्ञानिक ने कहा है ठीक हो जाते हैं? कौन से डॉक्टर ने कहा है ठीक हो जाते हैं? नो, यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम COVID-19. ओनली योर body potential can keep you fit against it. No other way. Therefore, don't lead in darkness. Don't live in darkness. No one is there with you to help you come out of COVID. People are not using personal protective equipments, means masks they are not using, and those who are using, nose is not covered, and in some cases even lips are not covered, and when they talk it falls, and they talk. I have seen on television, I have seen on videos, people talking and mask is hanging. So what is purpose? Even these foolish leaders are doing same thing. All leaders, all journalists, they are talking and talking while mask is down. No glasses, nothing. So what shall you call this? This is called carelessness. लापरवाही कहते हैं इसको. आपने मास्क किसके लिए लगाई है? शायद दिखाने के लिए लगाई है या उसे संभालने के लिए लगाई है. ये सोचिए. कोई शौक़ है नहीं लगाने का? अरे भाई कच्छा भी पहनते हैं, बनियान भी पहनते हैं, कमीज भी पहनते हैं, पैंट भी पहनते हैं, तो मास्क बांध लीजिए, रुमाल बांध लीजिए डायगोनल करके, कुछ और बांध लीजिए. नहीं तो ये आपको बांध देगा, याद रख लेना. कोविड ट्रम्प को नहीं छोड़ता है. कोविड आपके मुखर्जी साहब को नहीं छोड़ता है, तो चलेगा इस दुनिया से. तो मेरी और आपकी क्या औकात है कि हम बहुत संभल जाएंगे. कोविड एक ऐसा हथियार आया है ऊपर से जिसके सामने सब फेल है. तो आप छोटे लोग, गरीब लोग क्यों मरना चाहते हो इसकी वजह से? दैट इज़ ए बिग क्वेश्चन मार्क. अमीर मरते हैं, मर जाएं. इंडस्ट्रीज मरे तो मर जाएं. राजनीति वाले मरे तो मर जाएं. मैं और आप क्यों? आखिर क्या बिगाड़ा है? हमारा कसूर क्या है? हमारा तो कसूर नहीं है. तो भाई हमें कोई कहे मुझे कि ये करना है या वो करना है, तो पब्लिक के आदमी को ही सोचना है. भूल जाओ समय कि 6 फुट की दूरी और मास्क है ज़रूरी. ऐसे कविता के डायलॉग बहुत सुने. अब ये खाली 6 फुट की दूरी काफ़ी नहीं है. हवा में भी है ये आपका कोविड, पानी में भी आता है कोविड, सीवर लाइन से भी आता है कोविड, प्लम्बिंग के स्टैक से भी आता है कोविड. जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि मोशन में ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जैसे ही आप फ्लश करते हैं जा सकता है, आ सकता है, एक स्टैक से दूसरे स्टैक में जा सकता है. ये बातें समझने की हैं. और
ये सब पे लागू होती है. Therefore, I'm not blaming anyone. I am just trying to disseminate information about what I get from one source or from other source through science magazines or through science reports or something else like that. I'm just trying to share with you guys what should be done, what should not be done. That is exclusive, objective behind this talk. I'm not trying to scare you, not at all. There is no meaning to scare anyone. You are strong enough. You have to understand what to do, what not to do. Try to use mask all time, because one time sneezing or one time cough can deliver up to 3,000 particles of these droplets called aerosol, aerosol. These are very dangerous. This is the structure of this. The structure of the infection. Say I walk on road, I release my sneezing, I drop or I release 3,000 particles. Somebody coughs and that person releases 3,000 particles. And if there is even 10 km per hour wind, breeze or 20 km, it will take it away to some distance, and these 3,000 particles are dispersed into air. And by chance, say you are there in that period, all these particles stay in air for about 4 to 5 hours, and you even get one sucked in. So that time COVID enters your body, and say all these particles are inhaled by all people. What shall happen then? That's a basic question to be understood. And if you can understand that, it's fine. Use glasses, use cover up of your nose and mouth, and every time cover yourself. Even you are in WC, yes, of course, during bath you can't do that, but you have to take precautionary measures. Garam pani, hot water, boiled water, only boiled water without leaving it to, because this particle dies at a temperature of 90 degrees to 92 degrees Celsius, according to research conducted by French engineer long back. So we have to keep ourselves in this temperature range of 100 at least 3-4 times. Say to take their water, say 1 cup water 3-4 times, you take that. Now it's too cold, it's not very hot, so even then you can take sun rays, you can take hard food and use mask and all, and goggles also. You can use glasses, because speed of entering through eyes of this particle is 50 times than with which speed it enters your nose or into your mind. This point must be very explicitly understood. This is called precautionary approach, precautionary measures. Otherwise, now we may have 10 crores or 100 millions impacted people or positive people, which range could go up to 30 or 40 crores in coming months, because government is not doing anything. In fact, just a showpiece government, advertising government. They are just giving data, and they have reduced even when testing speed, but average infection rate is more than 8%. How far that is correct, I cannot assure, but you can go to my government.in, mygovernment.in /COVID-19 site. You will find this. Generally, I try to post every day my analysis on that, except period when I was hospitalized. Even then, I'm in bed. I try to see it every day, so that it can benefit people. It's only for that purpose. I just want to keep sharing whatever information I get. I have also seen that experts are now telling these vaccines which may come in actually are not fundamental solution. They are not fundamental solution. This is just the augmentation of your immunity system, and that is also very little according to experts that we received now. So you do not rely on vaccines. Also, your best vaccine is
Boil water and drink a cup immediately. One time, two time, three time, four time, all your family members, so that at least you develop resistance in your system. And because it's not simply SARS now, SARS, you know what it is: severe acute respiratory system. It's not that alone, it's one of causes. There are more causes now. It can impact your mind, it can impact your eyes, it can impact your heart, it can impact your kidney, it can impact your liver, it can impact your sexual organs, it can impact wherever it wants to. There is no need on every visa that COVID needs from you. No visa is required for it. No electron microscope can identify weight. So this is invisible type of organ, invisible in the sense that you do not know what it is. It's secrecy, natural secrecy, God secrecy. So we have only, when you know nothing is like a ghost or a spirit that can't be seen, you may say that. ऐसा लगता है कि हमें ये दिखेगा नहीं, वैज्ञानिक फेल हैं, अब तक सब फेल हैं, हमारे जितने भी एडवांस इक्विपमेंट है सब फेल हैं, कोई जानता नहीं है, सब ख्याली पुलाव हैं। जब ख्याली पुलाव होते हैं तो उससे पेट नहीं भरता है, पेट तो इंफॉर्मेशन मिलने से भरता है। ये हार्ट गेटिंग इन दिस इंफॉर्मेशन। I tried to many times before also. I submitted, posted many such informations, but people enjoy saying I'm against nation. Well, they may say anything. Who bothers about that? They let them park. I don't care for those people. I care for what I think and what report I get from some source. I care for that. So when I was little better today, I thought, let me think and talk to you people about what's happening currently, because I know when I write postings, people may not read that, or they may not like to read those posts. So for them it's a talk, or you can say like voice message. You may consider this, that I'm raising my voice for your knowledge, your information, or dissemination of knowledge regarding what's happening COVID-19 now, and how it's working, how it would impact everybody. That is important information, and that's very important point. Sorry. So I would simply say that that do not take it for granted. This is not comfortable stage now. Even you know what's happening in America, what's happening in England, what's happening in European countries. Everywhere there is a turmoil of COVID. Even Trump is isolated, Trump's wife is isolated, and what happens to those people I do not know. They have crossed already 2 lakhs. We are somewhere around 100,000 of 1 lakh. So figure is not very important at this stage. Precaution is important. We do not we do not want to see more people infected, because once you are infected, of course you will be discharged, but you have to face adverse impacts of this particle, of this entity throughout your remaining life. That was important point that I wanted to share. सिर्फ इतना कहूँगा कि कोई साथ नहीं देगा जब मुसीबत आती है, तो ख़ास तौर से जो गरीब हैं, जिनके पास लाखों रुपए नहीं है अस्पताल में जाने के लिए, उनको कम से कम अपना बचाव सरकार के भरोसे न रह के अपने भरोसे करना पड़ेगा। नहीं तो भाई हो सकता है आपको हो जाए और पता लगे आपको जाके अस्पताल में नहीं भी था तो क्या हुआ, और किसी चोर ने, डॉक्टर ने आपकी किडनी निकाल ली, कुछ और निकाल लिया। खैर मैं वो सब नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसा हो रहा है, जो कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और बहुत ही गलत काम भी हो रहे हैं इसके पीछे। मुझे राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं है। राजनीति वाले तो इलेक्शन में लगे हैं, अपनी पोजीशन बचाने में लगे हैं,
आपको कौन सोचने वाला है? 10 करोड़ों को हो जाए, 15 करोड़ को हो जाए, आधी पब्लिक को हो जाए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये मेरा कहना था आपसे। आपको समझना है, नहीं समझना है, आपको देखना है। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। आपको समझना है सीरियसली, गंभीरता से, हंस के नहीं, सीरियस होके, मजाक में नहीं लेना है। मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर से लोग लापरवाह हैं। सड़कों पे बिना मास्क, ठेले वाला हो, कोई रेडी वाला हो, कोई दुकान वाला हो, जो अब तो नहीं मैं बाहर जा रहा, लेकिन जब भी मैंने देखा, अस्पताल में भी मैंने कुछ लोगों को रोका। When I was admitted in hospital, visitors came to see the patients and I stopped them even when I was bad. Use your mask or don't bring disease to me. I had dispute with many people there. ऐसा होगा आपको खुद ही पुलिस वाला बनना पड़ेगा इसके लिए। कोई पुलिस वाला से आपने खुद भी योर ओन पुलिस मैन। एवरीबडी हैज़ गॉट राइट टू आस्क अदर यूज मास्क, otherwise you will be impacted upon by this. To be very simple, very simple, you have to be impacted by your, you shall be responsible for this, no one else. It shall be your responsibility, nobody else's responsibility. Your kids, your colleagues, your family members, your wife, your husband, your brother, your sister, your relatives, your neighbors, whoever they are, everybody is responsible for this. It's like, like safety program. We say safety, health and environment, HSC, health, safety and environment, and we say safety is responsibility of everybody. Health, safety and environment are responsibility for everybody. हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सावधानी से जिए, सावधानी से काम करे, सुरक्षा से काम करे। इसके लिए कोई पुलिस नहीं चाहिए होती। आपको स्वयं देखना है। तो आप दूसरे को कह सकते हैं, भाई आप मास्क नहीं लगाइए तो मुझसे बात मत कीजिए, गो एंड ब्रिंग मास्क और डोंट कम टू मी। ये ज़रूरी है? क्यों आप किसी को लीनियंसी देते हैं इस मामले में? आपका भाई भी क्यों ना हो, आपकी माता भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, आपका कोई भी क्यों ना हो, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि बचाओ। कोई बुरा मानता है तो माने, उसको समझा दीजिए, भाई समझ लीजिए। आप अपने दुश्मन तो बन सकते हैं, लेकिन आप दूसरे के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? आप छत पे जाके कूदिए मेरी बला से, लेकिन अगर आप पब्लिक सेफ्टी को ख़राब कर रहे हैं तो उसके लिए मैं अलाउ नहीं करूँगा आपको। इतने आपको सोचना होगा। छोटा बच्चा भी बूढ़े को कह सकता है, भाई आप मास्क लगाइए अंकल, या जो भी आप कहें, चाचा ताऊ, it's up to you. And if you cannot do that, then it is act against society, it's an act against a nation, it's an act against the world. If you cannot ask someone else, use this. Very important. इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। हाँ, डांट डपट भी करना पड़े तो करिए। पब्लिक सेफ्टी के लिए कर रहे हैं आप, अपने लिए नहीं कर रहे। आपने तो लगाई है मास्क या कपड़ा बांधा है, दूसरा क्यों ना बांधे भाई? तो हम तो आपको इनवाइट नहीं करते, जाइए, जाओ सड़क पे यहाँ से। अगर आप हमसे बिना मास्क या कवर के बात करना चाहते हैं, ठीक है, आप चश्मा लगाएं ना लगाएं, आपकी मर्जी। तो चश्मे से दूसरे को नहीं लगने वाला, आपको तो लग सकता है अगर आपने चश्मा नहीं लगाया, लेकिन नाक से दूसरे को भी लग सकता है, मुंह से दूसरे को भी लग सकता है। आँख से आएगा तो आपके अंदर आएगा, दूसरे को नहीं आएगा, ये पक्का है। अब मैं कितना एक्सप्लेन करूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। करीब करीब आधा घंटा होने वाला है बात को, और मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम ज़्यादा मैं ख़राब करूं। टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट, बोथ आर इम्पोर्टेंट। I think I have given you whatever was expected till now, because we have already somewhere reached, we may say this month, or I think already we are 65 lakhs somewhere, which is fake of course, but
Let us assume this, right? So it's going to be shown 1 crore, though there's already 10 crore. If you see by analysis, if you check analysis, you will find already it's 10 crore, and which may increase to 15, 20, 25, 30, depending on how it moves, what's R factor, how people are not serious. This issue we have to understand. मैं समझता हूँ मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी है, जो मेरी ड्यूटी थी बताने की. आई थिंक यू गॉट इट, एंड सो आई पुट इट ऑफ नाउ. आपका धन्यवाद अगर आप मेरी बात सुनी है या बाद में सुनेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बस मैं फिर कहूँगा आपसे, मेरी निवेदन है कि अपना ध्यान रखें. इसके लिए थैंक्स.